Hello, my guys. So, presently we are learning the chapter How Things Change. Okay, Science chapter number 6 How Things Change. So, already we discussed the term change. Change का मतलब क्या है? Change को हमने हिंदी में परिवर्तन कहते हैं. Then type of changes like reversible change, irreversible change, physical change, chemical change. Then today now we are moving to other topic, that is ways to bring changes. How can we bring change? Okay, so this is the last topic of this chapter. Let us start. So guys, we learned about physical change and chemical change, then reversible change, irreversible change. ये सभी हमने पढ़ाई किया. So अभी it's time to learn the ways to bring change. ये change कैसे हमको कर सकते हैं. So we can bring or we can make some change by heating or cooling. Second, by applying pressure. And third one is by mixing. So if we are heating or we are cooling, okay, we are giving any temperature difference to any matter, or we are applying some kind of force or some kind of pressure, or we are mixing any two substance. So all this kind of activities it will bring a change. इसकी वजह से एक change हो जाएगा. So first one, heating or cooling. Like we know sea breeze, then land breeze. ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी it is happening due to the heating and cooling of our land and water. Then evaporation, condensation. This is also happening due to our heating and cooling. Okay, so these results we can find in our nature. So now talking about metals के बारे में बोले तो like we can take an example of iron देखिए तो if you are heating it, objects like iron, if you are heating it, what will happen? It will get expanded. Okay, it will get expanded. Expanded मतलब क्या? उसका साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. ओके, उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर कूलिंग इट, अगर हमने उसको ठंडा किया तो क्या हो जाएगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ए स्पेशलिटी वी कैन फाइंड इन मेटल लाइक आयरन. ओके, so we are taking advantage of this property of iron. Like if you are making or if you are building an iron rim to fix around our wooden wheel. Okay, जो wooden wheel होते हैं उसका चारों तरफ हमको पता है, जो बुल्लो कार्ट्स में सभी उसको चारों तरफ क्या रखते हैं? आयरन रिम रखते हैं. ओके, सो ये लोग ये आयरन रिम कैसे रखते हैं? हमको पता है जो आयरन रिम हमने डालता है वो टाइट में, अच्छा सा टाइट में रहना चाहिए ये वुडन व्हील में. सो ये लोग क्या करते हैं? आयरन रिम को, ओके, आयरन रिम को ये वुडन व्हील में डालने के पहले इसको थोड़ा हीट करते हैं. ओके, सो हीट किया तो क्या हो जाएगा? आयरन रिम थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा. तो it will get easily fit on that wooden wheel. बाद में हमने कूल किया तो क्या हो जाएगा? it will come back into its original position and वो wooden wheel में वो अच्छा सा टाइट हो जाएगा. okay, so this same technique we are using for making metal tools like spades, ploughs, ये सभी बनने, axe, ये सभी बनने के लिए हमने ये सेम टेक्निक यूज़ करते हैं. Okay, so that is the first method to bring one change by heating or cooling. Okay, heating करते हैं और cooling करते हैं. Second method, that is by applying pressure. If you are applying some kind of pressure on that particular object, especially soft solid object like rubber, sponge, ये सभी होते हैं, इसमें हमने थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? इसका शेप बदल जाएगा. ओके, देन द थर्ड वन, बाय मिक्सिंग. ओके, बाय मिक्सिंग.
सो मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग इज कंबाइनिंग टू सब्सटेंस. ओके, दो सब्सटेंस को हमने एक साथ रखते हैं, दैट इज मिक्सिंग. लाइक इफ यू आर adding some sugar into water, it will become sugar solution. Okay, so this is a kind of change. It is happening because of the mixing. हमने शुगर को वाटर के साथ मिक्स किया तो क्या हो गया? इट turned into a sugar solution. Okay, and this is a reversible change. इसको हमने एक reversible change कहते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर हीटिंग दैट वाटर, हमने वो शुगर सॉल्यूशन को हीट किया तो वी कैन रिकवर दैट शुगर. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ए रिवर्सिबल चेंज. देन इफ़ यू आर एडिंग क्यूक्लाइम मतलब क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO. ओके, इफ़ यू आर एडिंग क्यूक्लाइम इनटू वाटर वी कैन ऑब्टेन स्लाइक्ड लाइम. ओके, CaOH टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज़ ए इरिवर्सिबल चेंज. मतलब हमको ये स्लाइक्ड लाइम से वापस हमको ये क्यूक्लाइम नहीं बना सकते हैं. ओके, सो बाय मिक्सिंग वी कैन ब्रिंग रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. सो आज हमने क्या पढ़ा किया? द वेज टू ब्रिंग change. Okay, how can we bring certain kind of changes to the objects or to some substances? So the first method is by heating or cooling. कोई भी ऑब्जेक्ट्स को और कोई भी सब्सटेंस को हमने हीट करते हैं, गर्म करते हैं और कूल करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं. इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को और वो सब्सटेंस को कुछ चेंज हो जाएगा. ओके, स्पेशली मेटल्स के बारे में बोला. मेटल्स को हीट किया तो इट विल गेट एक्सपेंडेड और कूलिंग किया तो क्या हो जाएगा? इट विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड. देन बाय अप्लाइंग प्रेशर, इफ़ यू आर अप्लाइंग प्रेशर और सम काइंड ऑफ फोर्स, व्हाट विल हैपन? वो ऑब्जेक्ट का शेप बदल जाएगा. थर्ड वन बाय मिक्सिंग. ओके, मिक्सिंग मतलब क्या है? हमने एक और उससे ज़्यादा सब्सटेंस को हमने एक साथ डालते हैं, कंबाइन करते हैं. ओके, we are putting together one or more than one substance, that is mixing. so ये मिक्सिंग की वजह से रिवर्सिबल चेंजेस भी हो जाएगा और इरिवर्सिबल चेंजेस भी हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर 6th science chapter, how things change. Let us wind up today. Thank you everyone.